सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस, क्लास 11th, चैप्टर 3। ये हमारा नया चैप्टर है 11th क्लास के लिए। इसमें हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ द इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है। इसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन्स क्या होते हैं, फूड वेब्स क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम है कैसे हो जाता है, और फाइनली जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। लेकिन आज हम देखेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी, it is actually a branch of science or human science, we can say that, in which we study organisms. हम organisms को स्टडी करते हैं, चाहे वो organisms बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हर तरह के organisms को हम थोड़ी स्टडी करते हैं। अच्छा, and how the organisms and how they interact with each other, how they interact with each other. Yani we study organisms and how these organisms they interact each other, how they are dependent on one another, how they are interacting. Because of this interaction of these organisms, their life is possible. We are sustaining on this earth and their environment. इकोसिस्टम में हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करते हैं इकोलॉजी में। एक तो हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, दूसरा तो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं इसको हम स्टडी करते हैं, एंड देयर इंट्रैक्शंस, जो उनके दरमियान इंट्रैक्शंस है इसको हम स्टडी करते हैं। यानी इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। दिस इज इकोलॉजी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो कि हम ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर रेस्पिरेशन, हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये ऑक्सीजन आता है प्लांट्स से। सो इन अदर वर्ड्स, दीज एनिमल्स, they are dependent on plants. Without plants, animals can't live because there is no oxygen available for these animals. Same is the case with these plants. They need carbon dioxide. This carbon dioxide is being provided by these animals. So these plants are dependent on animals. So this is one type of interaction between. दूसरी एग्जाम्पल, जैसे अगर हम डॉग लेंगे, डॉग तभी जिंदा रह सकता है जब वो कुछ न कुछ खाए। वो कॉर्निवोर एनिमल है, अपनी तरह से कुछ भी खा सकता है। हम काऊ को लेंगे, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रासेस, दैट इज मीन इज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। Same is like human beings, we are for eating purposes, we are dependent on plants as well as animals. So life is possible on this earth only because of these interactions, because of this interdependence of one another. We are not only interdependent on another. Organisms are not dependent on one another only, but they are dependent on abiotic factors. What are abiotic factors? Abiotic factors are non-living factors. क्योंकि environment में 2 तरह के factors हमें आते हैं। एक है biotic, biotic means living, and abiotic means non-living. इसमें क्या क्या आता है नॉन लिविंग में? इसमें आता है सनलाइट आती है, इसमें मॉइस्चर आता है, इसमें एयर आता है, इसमें मिनरल्स आता है, इसमें गैसेस आते हैं, इसमें लाइट आती है, इसमें लिविंग में आएगा बैक्टीरिया आएगा, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे। सो दिस इन दिस इन्वायरमेंट देयर आर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑफ biotic components. So all kinds of interactions, whether that is within the organisms, or that is with the organisms, with their environment, with the abiotic factors, with the non-living factors, these all kinds of interactions are being studied in this ecology. So ecology, we can simply say that it is a science, it is a human science, it is a population science. It is that very branch in which every kind of organisms is being studied, and their interactions is being studied with one another, and their effects on the environment and their interactions with the environment is being studied in case of this environment.